Oh well, look what we have here. A video where someone decided to test out viral life hacks because, the internet is just overflowing with brilliant ideas that will definitely improve our lives and not just waste our precious time. I mean, who doesn't want to watch someone try to turn a potato into a phone charger? Sounds riveting, right? Get ready for some cringeworthy attempts at innovation that'll probably end in disaster. Or worse, mediocrity. I'll be here, rolling my eyes and croaking out my thoughts. Because someone has to keep it real in this jungle of nonsense. So, if you enjoy a good roast of the absurdity that is modern life, stick around, hit that subscribe button, and let's dive into this mess together. Just remember, if it stinks worse than my bog after a rainstorm, I'll be sure to let you know. आज मैं एक फेक प्रेग्नेंट लड़की की मदद से मूवी हॉल में स्नैक्स लेके जाने की कोशिश करूंगा, ये देखने के लिए कि क्या मुझे एंट्री मिलती है, क्योंकि पिछली बार गार्ड ने मुझे पकड़ लिया था। और इसी के साथ आज हम 4 और लाइफ हैक्स टेस्ट करेंगे। The classic let's test some life hack segment, because nothing screams productivity like watching someone attempt to turn their kitchen into a science lab. I can already smell the burnt toast and failed experiments. If I had a nickel for every time a life hack turned out to be a total flop, I'd have enough to buy a decent bog to sit in instead of enduring this nonsense. Let's see if they can actually pull off something useful, or if it's just another trip down the rabbit hole of ridiculousness. टेस्ट करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं अपने पहले लाइफ हैक के साथ, जिसमें हम लोग टेस्ट करेंगे कि क्या हम एक बौने को दूसरे पे खड़ा करके मूवी हॉल में एंट्री ले सकते हैं, वो भी सिर्फ एक टिकट के साथ। तो अभी मैं तुम लोग को अपने 2 दोस्तों से मिलाना चाहता हूँ। मेरा भाई। तो गाइस इससे पहले हम लोग मूवी हॉल जाएं और ये लाइफ हैक टेस्ट करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? पुष्पा देखी थी भाई, बट आपको देख के तो ऐसा लगता है कि आपने बस YouTube शॉर्ट्स ही देखे हैं। ओके। ओह नो। Honey bun sugar plum. अरे भाई अब चलते हैं मूवी हॉल पे। तो गाइस मैंने अभी टिकट ले ली है, 2 टिकट लिए, एक मेरे लिए, एक इसके लिए। मैं अभी गार्ड को बोलूंगा कि ये मेरे पापा है और इन्हें कुछ इंजरी है या फिर डिसेबिलिटी है। गाइस बाकी सब तो ठीक है, पर यहाँ पे Now we're in an elevator with some questionable antics going on. I can already sense the awkwardness radiating off the screen. What's next? A dance-off in a cramped space? This is the kind of scenario that could go from mildly amusing to downright cringeworthy in seconds. I mean, who thought this was a good idea? Elevators are for going up and down, not for whatever this is. Let's see if they manage to pull off something entertaining or if it's just a recipe for disaster. यहाँ पे थोड़ी टोन निकली हुई है पापा की। भाई देखते हैं क्या होता है। आ जाओ। पापा आराम से। ओह शिट, गार्ड देख रहा है। आराम से। कोई दिक्कत नहीं। ये रही टिकट। जा सकते। भाई अंदर घुस गए। गाइस एंट्री मिल चुकी है। ओह माय गॉड। तो गाइस अपना पहला लाइफ हैक तो सक्सेसफुल हो गया था, पर अभी भी 4 और लाइफ हैक्स थे टेस्ट करने के लिए। तो अब टाइम है अपना दूसरा लाइफ हैक टेस्ट करने का। तो गाइस अगले लाइफ हैक के लिए सोचो क्या होगा अगर तुम अपनी गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही भूल जाते हो और गाड़ी लॉक कर देते हो। इस सिचुएशन में 3 चीजें हो सकती है। सबसे पहले तुम अपनी गाड़ी का शीशा तोड़ सकते हो। पर इसमें बहुत नुकसान हो जाए। Oh, the classic this is going to be a disaster moment. When someone starts talking about how something is very risky, you know you're in for a wild ride. It's like watching a car crash in slow motion. You can't look away, even though you know it's going to be a mess. I can already picture the chaos that's about to unfold. Let's see if they can actually pull off whatever harebrained scheme they have in mind, or if it's just going to be another example of why some ideas should stay in the brainstorming phase. बहुत नुकसान हो जाएगा। सेकंड, तुम क्या कर सकते हो, एक मैकेनिक को बुला सकते हो, पर उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि तुम्हें आधे 1 घंटे वेट करना पड़ेगा। और गलती से अगर तुम रेगिस्तान में हो, वहाँ पे तो कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। तो भाई अब मैं तुझे एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे तू ज़्यादातर गाड़ियों के दरवाजे खोल सकता है। तो यहाँ पर खोलियो मत। और इसके लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक स्केल चाहिए। तो भाई ये थी अंदर गाड़ी की चाबी, और अब गाड़ी पूरी तरीके से लॉक्ड है। और फिर क्या करना है कि इसे इस गाड़ी के अंदर जो छोटी स्पेस होती है, बस क्या करने की स्केल घुसाने और खुल गया।
तो गाइस अगले लाइफ हैक के लिए मैंने इस 5 स्टार होटल में 20,000 रुपए का कमरा बुक किया है और ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि कल मैंने एक वीडियो देखी थी और उसमें मुझे पता चला कि अगर तुम एक रूम लेते हो 5 स्टार होटल में तो तुम्हें 20 से 30,000 की फ्री चीजें मिल सकती है। तो आज इसी चीज को हम लोग टेस्ट करेंगे एंड देखते हैं हमारा प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। तो गाइस अभी मैं 5 स्टार होटल के अंदर मैंने चेक इन कर दिया है 20,000। The classic let's talk about luxury moment. Because nothing says relatable like discussing the finer things in life while sitting in a plush hotel lobby. I can practically hear the sound of cash registers ringing in the background. It's always amusing how some folks think that flaunting their wealth is the way to connect with the average person. Let's see if this turns into an actual discussion or just another parade of excess. कर दिया है 20,000 रुपए, कुछ मिला के 1,500 रुपए का है। तो भाई ये है 1,500 रुपए का। Well, this just took a turn into the bizarre. 2 characters in ski masks. Are we about to witness a heist or a comedy sketch gone wrong? I can't tell if this is a prank or if they're actually planning something ridiculous. Either way, it's definitely caught my attention. Let's see what kind of chaos unfolds here. Hopefully, it's more entertaining than alarming. 1,500 रुपए का सामान प्लस 500 रुपए उधर 2,000 रुपए। Alright, now we're really diving into the absurd. 2 characters in ski masks, discussing money. This feels like the setup for a sketch that could either be hilarious or a complete train wreck. I can't help but wonder what kind of shenanigans they're planning. Are they about to pull off a ridiculous stunt or just have a laugh at their own expense? Either way, I'm here for it. Let's see how deep this rabbit hole goes. Let's go! ये देखो 3, 2, 1. Alright, we've got a countdown happening here, and it looks like something is about to go down. With the dramatic setup and the characters involved, I can only imagine this is either a reveal or a prank. The tension is palpable, and I am curious to see what they're up to. Will it be a grand success or a hilarious flop? Let's find out. कहाँ से खुलेगा? Well, it looks like we've got a heist in the bathroom. The ski mask, the serious expressions, it's like a scene straight out of a comedy sketch. I can't decide if this is going to end in chaos or if they're just here to make a ridiculous point. Either way, I'm all in for the absurdity. Let's see how this plays out. Oh, the plot thickens. The masked character is handing over a box, and the expression on the other guy's face is priceless, pure shock and confusion. This is the kind of moment that could lead to either a hilarious twist or a complete disaster. I can't wait to see what's inside that box. Is it something valuable or just a prank? Either way, this is definitely a scene to remember. तो गाइस नेक्स्ट लाइफ हैक के लिए मैं एक ऐसी जगह पे Finally, a shift to a life hack. I can only hope this one doesn't involve turning a potato into a phone charger or something equally absurd. Life hacks can be hit or miss, but when they hit, they can actually be useful. Let's see if this one is worth the hype or just another overhyped gimmick. Fingers crossed for something genuinely clever. एक ऐसी जगह पे आया हूँ लाइफ हैक टेस्ट करने हैं। तो गाइस अब टाइम है अपने आखिरी लाइफ हैक को। Finally, we're back to a life hack. This one looks promising, especially with the enthusiasm in the presentation. I'm curious to see what clever trick they have up their sleeve this time. Let's hope it's something genuinely useful and not just another gimmick. Bring it on. आखिरी लाइफ हैक को टेस्ट करने। Well, folks, we made it through another riveting journey down the rabbit hole of so-called viral life hacks. It started off with me rolling my eyes so hard I thought I'd lose them in the bog, and sure enough, we got treated to an array of questionable antics. Who knew trying to turn a potato into a phone charger was all the rage? Spoiler alert, it's not. My expectations from the intro, let's just say they were met. Mostly by the attempts at hilarity and chaos that unfolded before our eyes. Like a car crash, you can't look away from. Some moments were so absurd they'd even make a toad like me shake my head in disbelief. In the end, while a couple of those hacks may have had a glimmer of potential, the rest were a mess of absurdity, wrapped in a ski mask of overhyped nonsense if the goal was to entertain. Well, mission accomplished, even if I spent most of it cringing. If this video stinks worse than my bog after a rainstorm, at least it was a fragrant reminder to never trust the internet with anything remotely useful. So if you enjoyed this train wreck of life hacks, or just want to see me continue to roast the ridiculousness of it all, don't forget to subscribe and give this video a thumbs up. After all, who doesn't want to join a grumpy old toad for more eye-rolling fun? Until next time, keep it real or at least keep it absurd.